Good morning, friends, and welcome back to Trans India. Real people, real emotions. Earlier this month, Hydraulic Trailer Owners Association celebrated its 15th anniversary and held an event in New Delhi to commemorate the occasion. The chief guest for the function was none other than the Union Minister of Road Transport and Highways, Mr Nitin Gadkari, who has always been a friend and well-wisher of the Hydraulic Trailer Owners Association, also known as HTOA. It is always a delight to have Mr. Gadkari attend transport meetings because he doesn't spare the opportunity to share his future goals, which are often revolutionary, but also because he listens attentively to the problems of the industry and assures action wherever possible. For example, listen into what Mr. Manish Kataria, founder member of HTOA, had to say regarding the harassment of truckers in Madhya Pradesh. हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य है माननीय मंत्री जी, मैं विशेष रूप से इस पर आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा, जो पूरे देश से बिल्कुल अलग दुनिया चल रही है, मध्य प्रदेश। कई बार हमारी आपकी इस विषय पर चर्चा हुई और आपने आश्वासन भी दिया, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बिल्कुल पहले से भी स्थिति बदतर है। और आज जबकि केंद्र में और राज्य में दोनों में ही भाजपा की सरकार है और आपका जो परचम है पूरे देश में लहरा रहा है, तो मैं आपका विशेष पर्सनल ध्यान इसमें चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसके अगर आप संज्ञान में हमारी इस पीड़ा को पहुँचाएँ और हमको राहत दिलाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश की पीड़ा से पूरा देश ग्रसित है। ना कि साधारण ट्रक वाला और हाइड्रोलिक, मतलब पूरा देश एक छोटे टेम्पो से लेके आज हमारे हाइड्रोलिक ट्रेलर जो 1000 टन की क्षमता लेके चल रहे हैं, वो सब मध्य प्रदेश की पीड़ा से। पूरे देश में एक ऐसा लगता है कि अलग राज्य है जिसको भारत के कानून से कोई मतलब नहीं है, तो उस व्यवस्था में परिवर्तन की हम आपसे निवेदन करेंगे। Well, viewers, Mr. Kataria spared no words in expressing his displeasure on the activities happening in Madhya Pradesh. And the response was that the very next day, Mr. Nitin Gadkari issued a letter to the Chief Minister of Madhya Pradesh asking him to take necessary action since the state was getting a bad name because of harassment and corruption at the checkpost in Madhya Pradesh. While we'll wait to see what action the state government takes, we know one thing for sure, that Mr. Gadkari is swift at taking action, the only challenge being to convince him to do so. Therefore, it is very important for transport associations to make proper presentations targeted in the right direction. Coming back to the HTOA event, the function was also attended by members of HTOA from across the country. The association felicitated senior members and founder members of HTOA. For those who do not know much about the hydraulic movement, we'll tell you a bit more coming up after this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जयो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back, friends, to Trans India. Real people, real emotions. Very often on the highways, we see huge project equipment being transported that weigh much more than the allocated 55 tons in a tractor-trailer truck. These consignments not only weigh more, but also are over-dimensional. Very often, these consignments can weigh more than 500 tons and also cross 1,000 tons in some cases. The movement of these consignments is a very complex operation with many factors to be considered. On many occasions, roads are to be constructed for the movement of this kind of cargo, which is done through hydraulic trailers and axles. Until some years ago, movement of this kind of cargo was a cumbersome process because getting permissions itself used to take up to 6 months with the involvement of different departments. However, HTOA was continuously following up with the government to make this process simple. After a lot of hard work and active involvement of Mr. Nitin Gadkari and other officials of the Ministry of Road Transport and Highways, 7 years back, online permission was made available for over-dimensional cargo weighing up to 300 tons. A process which used to take up to 6 months is now being done at the click of a button. This is a huge achievement for the association and for all the ODC operators across India. HTOA not only celebrated its 15th anniversary but also the 7th year of online permission for ODC movement.
Incidentally, HTOA happens to be one of the most organized and professional managed association in the country, and its function was testimony to the same. HTOA made sure that the event was organized in the best possible manner, and the icing on the cake, of course, was the presence of Mr Nitin Gadkari and other MORTH officials. The welcome address was delivered by Mr Nilesh Sinha, General Secretary of HTOA, and this is what he had to say. आज का जो आयोजन है ये दोहरी खुशी लेकर हमारे लिए आया है। एक ये कि HTOA की स्थापना के 15 वर्ष हो गए, और दूसरी ये कि हाइड्रोलिक टेलर मूवमेंट के लिए जो एक क्रांतिकारी कदम 2015 में माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा लिया गया था, उसका असर एक ज़मीनी स्तर पर पिछले 7 साल में देखने को मिला। सर, आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 7 साल में आपने जो ODC पोर्टल का उद्घाटन करा था और देश को समर्पित करा था, उससे अभी तक 55,000 परमिशंस इशू हुए हैं, और ये अपने देश के लिए ही नहीं, ये पूरे विश्व में ये इस तरह का रिकॉर्ड है या डेटा है जो एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने की तरफ एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है, हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस सिस्टम्स हैं वो फॉलो नहीं होते हैं, लोग जो कानून है उसका सही तरीके से पालन नहीं करते। ये जो एब्स्ट्रैक्ट में बात होती है या नॉन मेजरमेंट के थ्रू बात होती है, आपके इस क्रांतिकारी कदम से ये हो गया इस पर्टिकुलर हेवी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में कि डेटा कलेक्ट होने शुरू हो गए। ये सबके लिए खुशी की बात है कि अपने देश में लोड का कैटेगराइजेशन जिस तरीके से करा गया है फ्रॉम HT1 to HT30, ये विश्व में कहीं भी किसी भी देश में इस तरीके से लोड का कैटेगराइजेशन नहीं है। और इसकी वजह से जो ईज़ ऑफ मूवमेंट आई है पिछले 7 सालों में, उसका असर ये है कि जो पहले प्रोजेक्ट्स डिले होती थी सिर्फ परमिशंस की वजह से या रास्ते में जो तकलीफ़ आती थी, एक तो आपने GST के थ्रू उस बॉटलनेक्स को दूर करा, लेकिन दूसरी जो हेवी कार्गो के लिए आती थी कि हर स्टेट में उनको परमिशन की ज़रूरत होती थी, वो सारी बाधाएं हट गई। और ये भी जो डेटा कलेक्ट हुई हैं, मिस्टर शोम कैन टॉक मोर अबाउट दैट, this also gives us a feeling that how this data has actually helping to build the future plans. हमारे देश में जो लोड मूव हो रही है उसमें HT1, HT2, HT3 कैटेगरी में ऑलमोस्ट 85% लोड मूव हो रही है, और ये 2015 के पहले इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। One of the leading transporters in ODC movement in the country is the NTC Group, headed by its founder and chairman Mr Chandramohan Kandaswamy. Addressing the gathering, this is what Mr Chandramohan had to say about hydraulic movement and his company. The whole HTOA association with the ministry, along with its strong representation, has facilitated the constant growth of heavy lift industry in the country. Furthermore, the recent Atmanirbhar Bharat drive has given the country a significant boost to become self-reliant. The success story across the sector because of this initiative has led to increased growth in the GDP. NTC Logistics is proud to say that it has risen to the challenges presented to touch greater heights. NTC is capable to move any cargo between just 100 grams to 1,000 tons anywhere in the globe. Last year, so we transported wind blades of 83.4 meter length, the largest its kind of in the country. All these capabilities building and efficiency to carry large consignment, all developed locally, has gone on to prove to the MNCs, manufacturing and EPC companies of outside India that we have ODCs and have the capabilities to meet their requirements, challenges, and to have in our infra potential.
This also gives the added value to manufacturers such ODCs in India and export to the global customers. NTC Group, with a vision to import advanced driving skill in the industry, has established its driving training institution, NTC Training Academy. Earlier was NTC Training Institute and Research. This institution imparts the professional training to drivers in the handling ODC and heavy logistics. It offers programs that are recognized by like NSDC, PM, KVY, DDU, GKY and LSC. Today, the institution is also recognized by IAO, International Accreditation Organization, and has trained over 30,000 drivers between 2000 and 2022. NTC Logistics has always oriented its advancement with a special vision on making logistics economically more effective, while also placing an emphasis on ecology to bring sustainability. Today, the NTC Group stands tall globally as the 7th largest specialized fleet owner and handles more than 3 million tons of cargo every year. To offset our carbon footprint created from such a large fleet, NTC Group, therefore, the direct is a part of its efforts and attention to restore enough greens, which would ensure a sustainable future for the generation to come. Apart from the planting tree on its own, NTC Group is creating awareness about the importance of growing trees through its NTC Green initiatives in collaboration with Vanam India Foundation and planting trees on 5,000 acres of land in Tamil Nadu. The ministry's support and assistance have always aided and encouraged us to customize our solution based on our needs of its diverse customers based on across the sector and industries. All our developments have been focused towards building an India that is self-reliant and the future ready. This has led us to become the pioneer in the renewable logistics space. We are more than thankful and happy to have received constant support from the ministry in all these years. It would be our humble request that the transport industry at large and HTOA in particular would be much grateful if we to be more focused on some areas like: 1. The vertical clearance of route boards, overhead bridges and toll plaza in the state and national highways, allowing seamless passages in over-dimensional consignments, all of which arrive as consequence to develop in manufacturing technology. 2. Parking infrastructure with basic amenities and future as seen abroad. 3rd, raising the height of ODC lane in the toll plazas. 4, actually strict policies to ensure lane discipline for safer passenger and cargo traffic. 5th, the faster clearance for approval of newly customized trailer to encourage more domestic manufacturers to innovate. Nearly 7 years back, with MORTH and HTOA support, the government introduced online ODC application processing. This created a massive transformation and extremely simplified the process and ease of doing business. We request your extended support in bringing more such modernizations and infrastructure development along the way on the highway. The transport industry has been India's backbone, and the backbone of the transport industry is our driver community. So one main aspect to build modernization is by gradually making the industry more professional by encouraging more skilled workforce to join the industry. All the above initiative will be boon for the welfare of driver community, who
undergo all the hardship and take all care to ensure the safe carriage and timely delivery of cargo with special care and attention. With this, I congratulate the government for all the achievements. I wish the longest serving Minister of Road Transportation and Highways in the Indian industry, Mr Nitin Gadkari ji, many more years of record-breaking achievements. With his clear vision and direction and many such modern initiatives, I am sure that the ministry will achieve the target of 2 lakh kilometer highway network completion by 2025 and billion cumulative miles of safe movements. Friends, earlier we heard about what Mr. Manish Kataria said about the problems in Madhya Pradesh. Mr. Kataria also spoke about other problems and achievements of HTOA. We'll know more about this coming up after this very short break. Stay tuned and keep watching Trans India, Real People, Real Emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back viewers to Trans India, Real People, Real Emotions. Let's listen into what Manish Kataria had to say about some other problems being faced by the ODC consignment and hydraulic movement operators in the country. आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री राजमार्ग भारत सरकार, श्री प्यारे खान जी, मेंबर रोड सेफ्टी, श्री जॉयदीप श्रोम जी NIC से, और हमारे सहयोगी श्री चंद्रमोहन, श्री जिग्नेश पटेल, श्री नीलेश सिन्हा एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों से आए हुए यहाँ पे अधिकारी, मेरे मित्रगण, इंजीनियर्स और भारी संयंत्रों का निर्माण करने वाले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के जो सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, उन सब का मैं आज की सभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री जी, जो क्रांतिकारी परिवर्तन आपने किया इस देश के लिए, सिंगल विंडो परमिशन ऑनलाइन करके उसका अभूतपूर्व जो उस डेटाबेस से जो चीज़ निकल के आ रही है, वो भारत के भविष्य का निर्माण करने के लिए एक पथ प्रदर्शक होगा। आपकी इस दूरगामी सोच के कारण, जैसा हमारे नीलेश भाई ने बताया कि 55,000 परमिशंस ऑलरेडी जनरेट हुई है 2015 से 2022 के बीच में। माननीय मंत्री जी, मैं आपको आकर्षित करना चाहूँगा आपका ध्यान कि अगर हम 1947 से अगर 2015 तक का डेटा देखें तो 54 परमिशन भी रिकॉर्ड पे नहीं थी, और ये मूवमेंट पहले भी ऐसे होते आ रहे थे, लेकिन कोई डेटाबेस नहीं था। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की देश को ज़रूरत है, वो चीज़ निकल के सामने नहीं आ रही थी। आज इस डेटाबेस के बेसिस पे और जो इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम की आपने जो कल्पना करी, उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसमें आपके आशीर्वाद से जो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में जो परिवर्तन किए गए, वो अपने आप में एक मूलचूल परिवर्तन था। उसके बाद आपने एक और आशीर्वाद जो हमको दिया, वो फास्टैग के माध्यम से दिया। पूरे विश्व में पहला ऐसा सिस्टम था जब हम माननीय मंत्री जी से मिले और 1 मिनट में माननीय मंत्री जी ने ऑर्डर किया कि फास्टैग इसमें क्यों नहीं हो सकता। मैं आज पूरे देश के, भारत के यहाँ के हाइड्रोलिक ट्रेलर ऑपरेटर बैठे हैं, उनकी तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। उसका हमारे कुछ दर्द सदाई आपका सहयोग मिला है, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश के हाइड्रोलिक ट्रेलर ऑपरेटर्स की तरफ से मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँगा। हमारी जो परमिशन सिस्टम आज की डेट में जो चल रही है, मंत्रालय से हमारा काफ़ी समय से विचार विमर्श चल रहा है कि इसको 2 पार्ट सिस्टम कर दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा ट्रक का जो मालिक है, जो ट्रेलर का मालिक है,
वो परमिशन अप्लाई करता है और वो पूरे समय और पूरी दूरी के लिए अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे रोड सेफ्टी की कंसर्न्स एड्रेस हो रही है नहीं हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि जो घटनाएं एक दो हो भी गई हैं वो भी भविष्य में घटनाएं ना हो। उसके लिए जो वज़न और माल की दिशा और कहाँ से जाना और कहाँ पहुँचना है, जैसे कि ई-वे बिल सिस्टम में पार्ट ए और पार्ट बी है कि माल से संबंधित विवरण पार्टी भरती है और जो ट्रक से संबंधित विवरण है वो ट्रांसपोर्टर भरता है। सेम व्यवस्था हम इसमें भी चाहते हैं कि अगर आपका आदेश हो जाए तो व्यवस्था इसमें लागू कर दी जाए। दूसरा अहम मुद्दा जो आज की डेट में हमारा जो कैरेज बाई रोड एक्ट है, जो नियम है, कानून है, उसमें जो भी कानून का दायरा है वो माल बुक होने के बाद शुरू होता है। हमारा सबसे बड़ा दर्द है कि आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टियां कर रही हैं उसमें बिल्टी बनने से पहले, माल लोड होने से पहले भी तरह तरह के उसमें पैनल प्रोविजंस वो लगा देते हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कंपनियां फल फूल नहीं पा रही हैं और कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां बंदी की कगार पर रो रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपका ये सहयोग मिले तो इससे जो भारत का सबसे छोटा ट्रांसपोर्टर है हमको उसको भी जीवित करना है। हमको जो समाज में आखिरी कड़ी तक जो ट्रांसपोर्टर खड़ा है हमें उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो इसमें अगर ऐसा कुछ संभव हो जाए कि जो ये नियमावली है कि उसमें पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो उसमें सही तरीके से ट्रांसपोर्ट का चयन कर पाए और ट्रांसपोर्टर का डेटाबेस हो पाए। कैरियर लायबिलिटी में जब हम बात करते हैं तो अभी आज की डेट में भाड़े का 10 गुना तक का प्राविधान आपने किया हुआ है। जो 2011 में नियम लागू किए गए उसमें भाड़े का 10 गुना प्राविधान एक साधारण माल के लेके उन्होंने प्रिज्यूम किया, जो मिनिस्ट्री का प्रिजम्पशन था कि अगर जम्मू से भी हमारे दक्षिण तक माल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी में जो माल होगा वो 1 लाख रुपए का भाड़ा बनेगा और उसका 10 गुना 10 लाख रुपए तक की लायबिलिटी होगी। तो हम आपसे निवेदन चाहते हैं कि ये 10 लाख की जो सीमा उस टाइम सोची गई थी उसको अधिकतम सीमा कर दिया जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ भाड़ा, क्योंकि हमारे हाइड्रोलिक ट्रेलर का जब मूवमेंट होता है तो उसमें कई तरह के दूसरे खर्चे होते हैं, जैसे कि परमिशंस लेनी होती है, कहीं रेलवे का शटडाउन लेना होता है, कहीं छोटे मोटे सिविल वर्क करने पड़ते हैं, इस तरह के बहुत से खर्चे होते हैं, बिजली बंद करानी पड़ती है, बिजली का पोल हटाना पड़ता है, इस तरह के टोल प्लाजा में कहीं सेंसर्स हटवाने पड़ते हैं, इस तरह के बहुत खर्चे होते हैं। तो उनको हम चाहते हैं कि किसी तरह से उसके कारण जब भाड़े का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है और हमारे ट्रांसपोर्टर्स पे बहुत बड़ा भार पड़ता है। अगर तीसरा हम चाहेंगे कि जितना माल परिवहन किया जा रहा है उसमें आप ऑल रिस्क ट्रांजिट इंश्योरेंस को मैंडेटरी करने का प्राविधान लाएं। कि अभी तक पार्टी की चॉइस है कि वो माल का बीमा कराए ना कराए, उसके कारण इंश्योरेंस की रेट्स इतनी ज़्यादा हैं कि जो छोटे तबके का मैन्युफैक्चरर है वो इंश्योरेंस को अवॉइड करना चाहता है और वो छोटे ट्रांसपोर्टर को दबा के बिना बीमे का माल उससे भेजता है और जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो ट्रांसपोर्टर भी बर्बाद होता है, व्यापारी भी बर्बाद होता है। ये नेशनल हाईवेज जितने हैं वो सारे हमारे इस पोर्टल के माध्यम से इंटीग्रेट हो गए हैं, लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी एक भी राज्य सरकार ने आज तक इससे इंटीग्रेशन नहीं किया है। तो एक टाइम बाउंड सिस्टम में अगर आपके मिनिस्ट्री से कोई नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाए जो सारे स्टेट हाईवेज़ का भी इंटीग्रेशन इससे हो जाए तो सड़क सुरक्षा में एक बहुत बड़ी परिवर्तन होगा, ताकि जो राज्य सरकार की सड़कों पे कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी बचत होगी। हम ये चाहेंगे कि इंटीग्रेशन हो जाए। आज जब वज़न की हम बात करते हैं तो BHL हरिद्वार में लें या ऐसे कई इकाइयाँ हैं जो 500-600 टन तक का माल बना रही हैं और उसके जो साइज़ हैं और जो वज़न है उसके कारण हर तरह की रोड पर उसका चलना संभव नहीं है। उसकी जब स्टडी करते हैं तो बहुत बड़ी सिविल कॉस्ट आ जाती है और उसमें माल के लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण भारत एक उत्पादन के हब के रूप में स्थापित अपने आप को नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में हमारा निवेदन था, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की संरचना उस समय करी गई माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, ऐसा ही एक ODC कॉरिडोर की संरचना पूरे देश में आपके कर कमलों द्वारा की जाए, जिससे एक बहुत बड़ा मूलचूल परिवर्तन होगा। ऐसा ODC कॉरिडोर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल चले, या नहीं अभी जो जैसे दिल्ली बॉम्बे आपका नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसमें ODC कॉरिडोर के बारे में भी विचार किया जाए। After listening to the issues being faced by members of HTOA and the ODC operators in the country, Mr Nitin Gadkari offered words of advice and also assured his assistance for ease of doing business. This is what Mr Gadkari had to say. Mr Jagdish Patel, Chairman of Hydraulic Tailors Owners Association, Mr Nilesh Sinha, Mr Manish Kataria, Mr Pyare Khan, Member Road Safety, Ministry of Road Transport, Mr Chandra Mohan, all dignitaries on the dais, distinguished guests, colleagues from industry and all my dear friends.
It's really great pleasure for me. I'm giving my special congratulations and best wishes to Hydraulic Trailer Owners Association for completing 15 glorious years. I feel that in these 15 years, your business is changed. Not only change, but it is transformed. And your contribution in the development of particularly industrial growth in the country is very, very important. Because once upon a time it was very difficult to take heavy material from one place to another place because of a lot of complications, lot of permissions, and the complicated procedures. That was the reason for many of the people was very much fed up. But in the new government, our policy is transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free. And because of using of digital technology, now it is easy for you to get the permission for national permit. And there is all stakeholders are already benefited because of that. The revenue is increased and you are getting permission as early as possible. The most important thing in industrial economy is our logistic cost is very high. In China, the logistic cost is 8 to 10%. The European countries and the USA, it is come to 10 to 12%. And in India, it is going up to 16%. Now, it is a big problem that the reason that it is the time for the country that how we are going to reduce the logistic cost. The first of all, my ministry has taken a decision that we will connect all districts by 4-lane roads, all ports, all airports. And now we are making green express highways, 26 green express highways. Now just take the example from Delhi to Mumbai. The one truck is taking time. Previously it was coming to 54 hours. But now the construction of this road, it can be only 20 hours from Delhi to Mumbai for the truck. And that is exactly where we reduce the logistic cost. We are connecting all ports at the same time by green highways. That is also a cost effective for all of you. For example, for taking all traffic, goods traffic from north side, it is Punjab, Haryana, Himachal, Uttarakhand, Kashmir, Delhi, Rajasthan, Gujarat, and taking it up to Tamil Nadu, Karnataka, Kerala. Now the route is from Mumbai. So after Mumbai by express highway, they have to go to Pune. And there are two connections, one is Pune, Solapur and Pune, Kolhapur. And after that you can go up to Chennai, Bangalore, Kochi, everywhere, Hyderabad in the south. But today we have taken a decision that all north traffic starts from Delhi. It only going up to Surat by express highway. There is a connectivity for Surat from express highway, and by which from Surat to Nasik, Nasik to Ahmednagar, and Ahmednagar to Solapur, by which it will be directly go to Chennai, Hyderabad, Bangalore and Kochi. So these are the axis control road. So there will be no problem. And also one of the reasons which is important for your business, that we are making the tunnels of 2,50,000 crores. So because of this tunnel also, it will be easy for you to transport heavy goods. So exactly the change in the road sector is very much helpful for all of you. The most important thing where I will request you regarding the fuel. The diesel and petrol is a fuel which is depending upon our imports. And our imports now, because of the heavy rate of crude oil, it comes to 16 lakh crores. But that is not only economically problem, but the most important problem is related with the pollution. So this is the time that we need to think on the line that import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. On the basis of that, I will request you, all of you, that you try to convert your trucks, heavy trucks, into LNG, electric, methanol, bio-CNG or bio-LNG,
or even you can convert into green hydrogen. Now I have got the car which is running on green hydrogen. The hydrogen from car called the coal, it is black hydrogen. Hydrogen from crude oil, petroleum products, that is to be brown hydrogen. And the green hydrogen is from water. Now our plan is to make the rate of green hydrogen per kg 70 rupees, 80 rupees, $1 per kg. And it gives the average of 400 kilometers for the car. So sewage water can be used, and the most important thing is the power. So we can use the solar power in it, the 70% cost is the power, and we can make it hydrogen from that by using electrolyzer. And by electrolyzer, whatever hydrogen we will get it, green hydrogen, we will pressurize it for 500 bar. That can be with the generator on ethanol, bioethanol. So now this is the future. The futuristic technology in the transport sector is very important. Now our planning is to make e-highway from Delhi to Mumbai as e-highway. Just like trolley bus, you can trust trolley trucks also. Now I know that I have received the invitation from the Volvo to start their big truck trailer on LNG. So LNG is the fuel for the future. If you are spending 100 rupees on diesel, for LNG the cost will come to 40 rupees, and for CNG it comes to 55 rupees. From hydrogen, green hydrogen, it will come to 20 rupees, and from electric it comes to 15 rupees. Now there is a lot of changes, lot of people are doing on different technology, not only a lithium ion battery, but now we can make sodium ion, zinc ion, steel ion battery. And once I visited here in the Faridabad in Indian Oil Laboratory, Research Laboratory, they have invented the aluminum air technology. And now it is the futuristic technology for transport. So I feel that even in Hajiara, one of the companies making trailer trucks on LNG. So I feel that it is the appropriate thing for all of you. It is cost saving, it is economically viable, it is import substitute and pollution free. And pollution is a big concern. Even as a transport minister in road construction, I am already requesting the people for heavy industries, which machinery we are using in construction equipment, for convert into ethanol, methanol, biodiesel, bio-LNG, bio-CNG, electric and hydrogen. So this is the future. Regarding your problems, we are already aware about it, because to get permission, there is a lot of corruption. Our motto is to how we can make the system free from the corruption. It should be transparent, digitalized system by which you can get all type of permits. But fortunately, the subject is in the concurrent list. The state government and central government both are responsible for that. In many of the things, when I tried my level best, I need cooperation from the state government. Without that, it will be difficult for me to implement the law. By new Motor Vehicle Act, we have introduced a lot of new things. But because of the concurrent list, because there are in our constitution, there are three lists. One is central list, where the federal government is supposed to make the law. Then state list, where state government are supposed to make the law. And the concurrent list, where the state and central government both can make the laws. Now the problem is that I know that you are facing problem in the state government because of the RTO departments, inspection, getting permission for everything. This process is really very, very problematic, complicated and creating more corruption. So that's the reason that we need to have a digitalized system. The NIC head is here. And our plan is to make everything digitalized, transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free. So this is exactly the mind of the government, that how we are going to make reform for that. And this is really one of the important reform, which is very, very important for our industry. Because we are the fastest growing economy in the world. And that is the reason that we need to have all type of effective transport system. Now in the road sector, we are making precast mandatory. So by which we need to take the heavy, big structures from one place to another.
We are just decided to make this ROB of 16,000 crore. We have just started the scheme, and where we are going to make everything precast. So exactly there we need to transport of the material where we need your help. So this is the time for the industry, for the country, which is the fastest growing economy, and where dream is to make India Atmanirbhar Bharat, the dream of our Prime Minister, and make the economy of $5 trillion. So my request is, when you go to all these automobile manufacturers, please insist them for making alternative fuels. It is cost effective, pollution free and indigenous. So I feel that it is really important for all of you. I know because of insurance and some of the problems are there already. I have just listened to the speeches of your concerning authorities. So my suggestion is, give the details to me. I will make it verification from my officers. Already our joint DG is present here. So we will make the research and study of it. Whatever the things are logically correct, we will do it. And which we are not convinced by it, we immediately reject it. That we are not going to do it. But we are transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free. We will seriously consider your valuable suggestions from reform. And exactly our all efforts are to make transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free digitalized system for all of you. That is exactly the mission for all of us. I am really happy to come here. Already one last point where I will request you regarding road safety. You should be very cautious about it. Now, one of your office bearer was suggesting me that you should fine for a heavy loaded truck where there is a violation. You should charge for the owner of material also. But then I asked him the question, why you are taking it? तुम लालची बनते हो और हमें कहते हो उनको सजा. So that will not be correct thing. We will charge you, we will punish you. Without that you can't understand, because there is a problem. कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं. So somewhere it is the duty of every stakeholders to, with a responsible approach, to obey the law. And that is exactly we are expecting from you. And I am confident that with your cooperation and cooperation of all stakeholders, we will increase the business volume. We will give the more facility to you for your business. We will make it transport available on the ports. And even in the railway also, we will try to find out the way of that, how it can be possible for you to, because in power sector, in the big machinery, the transport is very important. And that's the reason that we are making green express highways, 4-lane roads, the bridges. And the bridges having already bridges, they have a capability of heavy load. We are making tunnels because your transport on the hill area is very difficult. But by the tunnel, it can be easy for you to get the all type of heavy machinery there by using your transport. So I am really happy that this is one of the important things for the country, for the development. Because without reducing logistic cost and availability of good transport system for heavy machinery, without that we cannot make the progress. Because in the hydro projects, in the thermal power projects, everywhere we need transport of heavy goods. And that is the need of the country. And I feel that your role is very, very equally important, because your role is helping the country for development, for increasing growth rate. And by increasing growth rate, we are going to increase more employment potential. And that's the reason that we will increase our growth rate, GDP growth rate, by which we are going to create wealth for the country. And last thing I will suggest you that you can start driving training centers. Because I don't know presently how you are going to train the drivers. There is no system. The conductor is taking the advantage of his experience and your driver is giving the training him. And after that he is getting the license from the RTO. I don't want to go into the details of it, because I know what are you doing for getting license. So that is not the correct thing. In the big area, we have a scheme of trained drivers for heavy machinery. You can open your centers for that.
it can be good because road safety is very important. We need trained drivers. Then another problem is our drivers are working 24 hours. Even the European countries, in the USA, they are working only for 12 hours, 8 hours. So somewhere you need to find out some way out, but because of that, the drivers are facing crucial problems. Somewhere in the interest of the profession, in the interest of the industry, we are inviting some good suggestions from your side. In the interest of the society, in the interest of the development, in the interest of the country. I know that no philosophy can be taught to empty stomach. Every businessman has started his business for getting more profits. So it is no problem. It is legal and fair. But at the same time, the ethics are equally important in the business. By making good money, you should have your professional ethics about the business. There is competition. But regarding road accident, we are facing really big problem. We have 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. And that is exactly India is the highest in the world. Khan is also the member of Road Safety Committee. And we are taking big initiatives that how we can protect the life of the people. The Tamil Nadu government has successfully implemented the experiment by World Bank. World Bank and Tamil Nadu government, they reduced the road accidents and death by 50% in Tamil Nadu. But with the cooperation of all the stakeholders, my aim is to reduce the road accident and death of the people. We are now making a lot of changes in our codes as far as the automobile manufacturing is concerned. And at the same time, the people like you, if we can cooperate, really, it can be a great thing for the country and for the society. It's really a happy thing for me to interact with you. I'm giving my all best wishes to Hydraulic Trailer Owners Association. I will request all of you to give me in details regarding all your problem related with my ministry and some of the problem where you are facing troubles in some state also. Give it to me. I will forward my copy to CBI and ED also to make the inquiry for that. Because we need the system transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free. Once again, I am giving my all best wishes to all of you for completing 15 years successfully and giving my all best wishes to all stakeholders and members. God bless you. Thank you very much. Movement of ODC, as we mentioned earlier, is a very complex operation. Trans India spoke to a couple of senior members of HTOA, and this is what they had to say on their journey in this very challenging space in the road transport industry. In this episode, we listen into what Mr. Ram Ratan Agarwal and Mr. Bharat Gandhi had to say on ODC movement. Significant changes to main road infrastructure is a major change, and the industry has also grown due to the changes of the road infrastructure and the hydraulic movement. Because the industry, that capex items which we have not been able to produce in the India due to the lack of the transportation availability, the industry has also now understood that we are having an infrastructure to move the higher capacity cargoes also, and safely and timely. So they have also built up their manufacturing hubs here in India to get it done in a cheaper cost. What are the major challenges you face now in the movement of hydraulics? Major challenges are the regulatory issues which are in the control of the states in many of the states. So some of the issues which are at the state levels, we are trying to resolve it at a state level government, but basically we are not getting any positive impact to get it resolved in time. And what are your future plans from here on? Your company's plans? Future plan, we are generally having a cargo transportation up to 200 tons, and in that segment also there is a huge potential. So going ahead, okay, we can go for a higher numbers of the axles, and as the industry grows, we can increase the number. Presently we are having a 250 axles of our own. We are planning it to go ahead up to 400 axles. हाइड्रोलिक टेलर जो है उसको आज 15 बरस हो गया हमारा हाइड्रोलिक टेलर ओनर एसोसिएशन को। जब 2007 में जब 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि कोई भी गाड़ियाँ ओवरलोड नहीं भरने की, वो टाइम से जब हाइड्रोलिक एक्सल
उसका जो मोमेंट है उसका लॉन्च हो गया, इंट्रोडक्शन हुआ है 2007 और 8 के अंदर, क्योंकि जब से गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि ओवरलोड व्हीकल कुछ भी भरना नहीं है, उसके लिए मल्टी हैवी ड्यूटी के लिए हाइड्रोलिक एक्सेल ट्रेलर्स लॉन्च हो गया। उसका वो कंपनी में इंट्रोडक्शन हो गया, नई हाइड्रोलिक व्हीकल करके इंट्रोडक्शन हुआ है 2007 और 8 में। और हमारा एसोसिएशन जो है हाइड्रोलिक ट्रेलर ओनर एसोसिएशन, जिसमें जिसके पास हाइड्रोलिक व्हीकल्स है उनको हम लोग मेंबर बनाते हैं, वो उसका एसोसिएशन है। और रोड सेफ्टी के लिए, ब्रिज सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए ये जो ओवरलोडिंग बंद हो गया उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और हाइड्रोलिक ट्रेलर में जो भी माल भरते हैं उसके वजह से रोड डैमेज नहीं होते, ब्रिज डैमेज नहीं होते, मटेरियल जितना भी कॉस्टली है वो एकदम सेफ रहते। सेफ्टी इस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी वजह से कोई भी कंसाइनमेंट है जो करोड़ों रुपया वैल्यू है, तभी भी वो सेफ्टी नहीं थी, जिसका आज पूरा का पूरा सेफ्टी एक्सीडेंट होते नहीं है। और मैक्सिमम हाइड्रोलिक एक्सेल आज इंडिया की जितने भी अच्छे क्लाइंट है, मैन्युफैक्चरर है, वो अलाउड ही नहीं करते ओवरलोड कोई भी गाड़ियाँ भरने के लिए। और जितना भी GVW पासिंग है वो हिसाब से कंसाइनमेंट का वजन है वो हिसाब से माल भरते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम न आवे। और इंश्योरेंस में भी प्रॉब्लम नहीं आता अगर कुछ गलती से होता है तो भी। और पब्लिक सेफ्टी उसमें बहुत बढ़िया है। और हाइड्रोलिक ट्रेलर जब सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में था नहीं, वो स्पेशल कैटेगरी में ही था 2007 और 8 में, तब हमने मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे श्री नितिन गडकरी जी से बातचीत करके हमने वो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में ऐड करवा दिया है। और अभी हमारा हाइड्रोलिक ट्रेलर जो है वो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट CMVR में अप्रूव्ड है। जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ ट्रेलर या ट्रक्स रहते हैं, ऐसे हमारी गाड़ी भी CMVR में अप्रूव्ड हो चुकी है। उनके साथ जो जो प्रॉब्लम थे वो सब सॉर्ट आउट करके दिए गडकरी साहब ने। और आज हमारी हाइड्रोलिक ट्रेलर की ऑनलाइन परमिशन मिलती है ऑल ओवर इंडिया की। 2 मिनट में परमिशन मिलती है, तीसरे मिनट में हम पेमेंट भरते हैं और हमको 3rd मिनट में ऑनलाइन परमिशन मिल जाती है। और परमिशन ऑनलाइन कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चेक कर सकते हैं कि जेन्युइन है कि डुप्लीकेट है। उसकी वजह से हमारा जो भी रास्ते की अरेंजमेंट थी वो टोटली बंद हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया में इतनी अरेंजमेंट थी हाइड्रोलिक ट्रेलर वाले के लिए, जब से CMVR में आ गया तब से ऑनलाइन परमिशन आ गया, तब से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बेनिफिट मिला है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की उसको भी काफ़ी प्रमोट मिला है। तो हम गडकरी जी का खूब आभार मानते हैं कि हमारी जो जो समस्या थी टाइम टू टाइम उसने हमको हमारा सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दिया है ऑफिशियली CMVR में लाने के बाद। Well friends, that's it from Trans India this week. Next week we will be getting you more exclusive interviews with the chairman and other office bearers of HTOA, and we will know more about what the association has done and what are its future plans. See you again next week. Until then, stay safe. Jai Hind.